ओके होपफुली आई एम लाइव एंड ऑडिबल। आपको होपफुली मेरी आवाज़ सुनाई दे रही होगी और मेरी नहीं तो बाहर जो कुत्ता भौंक रहे उसकी आवाज़ सुनाई देगी। हेलो एंड वेलकम टू ए फॉर आर्सेनल गाइस, whoever is here. um, Today we're going to talk about the Wolves versus Arsenal game and we're going to preview it. And I was supposed to make a video yesterday, मेरे को कल वीडियो बनाना था, but क्या करें यार, लाइफ हैपेंस। yesterday I had a meeting and I could not go on किसी और के भी चैनल, खुद की भी वीडियो नहीं बना पाया। So I'm coming here today with you for this live and like I said, एक सेकंड यार देखते हैं सब ठीक है। हाँ, looks like सब ठीक है guys। ऑडियो सब ठीक है? कोई कमेंट्स में लिख दो, whoever's here. Okay. So we are going to talk about, इसको मैं स्क्रॉल कहाँ से करूं भाई? हाँ, ये रहा। So we're going to talk about match day 16 of 38. Match day 16 of 38 matlab, thanks Ashwin. Match day 16 of 38 means we've pretty much crossed the bang bang. We'll talk about the World Cup at the end, don't worry. Right now we are talking about this, ladies and gentlemen, right? So um Wolves versus Arsenal is going to be a very interesting game simply because, well, it's the last game before the World Cup. And for Arsenal, it's very simple. You win this game, you end the season before the World Cup top of the table. And I think for Arsenal, that is going to be a huge motivational and psychological boost because, भाई, अगर top of the table finish कर रहे हो आप लोग, thanks Bang Bang, yeah, good prediction, 2-1. We'll predict also. So like I was saying, ki for Arsenal, it's going to be a huge psychological boost, a motivational boost, and it's going to be a huge boost in the transfer window also. Thankfully, it's the best time to play Wolves because Wolves don't seem like they are a team that is on form. They have their own issues. उनका manager sack हुआ था, अभी Julian Lopetegui I think अभी ही आए हैं. So it's going to be a huge game for Arsenal as well. For Wolves as well. कि their manager would want a winning start. And द थिंग इज, जैसे वुल्स पिछले गेम्स में खेला है, अब पता नहीं वो इस गेम में भी सेम गेम प्लान के साथ जाएंगे या नहीं, बिकॉज बट टू बी ऑनेस्ट यू डोंट नो कि लोपेटेगी क्या करेगा। आप अब्रॉड स्टे कहाँ कर रहे हैं? आई एम स्टेइंग इन डबलिन इन आयरलैंड, बैंग बैंग। सो लाइक आई वाज सेइंग दैट you don't know what will happen. Maybe Lopetegui won't change many things and Wolves will play just how Wolves play, which is good for us, which means we can attack them a lot and we can beat them. Or Lopetegui could do what Unai Emery did at Aston Villa, right? Against Man United. Um, पूरा मतलब game style change कर दिया. The players looked refreshed and Manchester United was shocked in the first 10 minutes itself. 2 goal खा लिए थे. So I hope कि like Arsenal का game is much easier than what Man United had to face with Unai Emery. Lopetegui himself is a decent manager, former Spanish manager. Madrid के भी तो बहुत थोड़े टाइम के लिए रहे थे. And अभी कहाँ से? I think Sevilla से आए हैं ना? So Lopetegui, of course. Hello, bro. Hello, Prash. How are you, Prashant? Lopetegui is a good manager himself. So I hope कि Arsenal has an easier game. Wolves play like how they've played, and yeah, Arsenal win. So let's एक बार जल्दी से also look at Wolves का last game, right? Let me share the screen. एक बार share screen, Chrome tab, Wolves versus Brighton. राइट। अगर हम वुल्व्स वर्सेस ब्राइटन देखें, ओके, दिस वाज देयर स्टार्टिंग लाइनअप। एंड अगर आप देख सकते, सबसे पहले ही नेल्सन सेमेडो जो प्लेयर था, ही वाज सेंट ऑफ इन दैट गेम इन द फर्स्ट हाफ। तो नेल्सन सेमेडो विल नॉट प्ले मोस्ट लाइकली के डेफिनेटली इज नॉट गोइंग टू प्ले। बट अगर आप ये वुल्व्स की टीम देखो, दे वेंट फॉर अ बैक फोर एंड इट वाजंट दैट इंप्रेसिव। वुल्व्स ट्रेडिशनली बैक थ्री के साथ खेलती है। अब आई डोंट नो इफ इट्स लोपेटेगी जिसने बोला था कि हम 4-3-3 खेलेंगे, सो वी कैन एक्सपेक्ट अ सिमिलर फॉर्मेशन फॉर वुल्व्स दिस गेम में एज वेल। पता नहीं उनका राइट बैक कौन खेलेगा, बट of course Josisa, very good keeper, he's going for the World Cup as well. Max Killman, Nathan Collins,
बर्ट्रैंड ट्रायोरे, रूबन नेवेस ऑफ कोर्स, उन्होंने पेनल्टी गोल मारा था। गुंसालो ग्वेडिस इज अ गुड प्लेयर जो उन्होंने वेलेंसिया से लिया था। हुआंग आर्सेनल के अगेंस्ट उन्होंने गोल मारा हुआ है। डैनियल पोडेंस इज अ गुड प्लेयर। मुटीनियो है, स्लो हैं थोड़े से, बट अगेन यू कांट रियली डू। वही है यार, हमारा तो आर्सेनल का एक ही चीज होता है, इट्स ऑल ऑन हु कंट्रोल्स द मिडफील्ड। रूबन नेवेस इज अ ग्रेट डिस्ट्रीब्यूटर, so shutting him down is going to be very essential. Same with Moutinho, चाहे slow हो, but he's a good person who moves the ball forward काफी अच्छे से। बर्ट्रैंड ट्रेore, ही इज ऑलराइट, थोड़े पेसी हैं। मेरे हिसाब से डेंजर मैन फॉर वुल्व्स वर गोइंग टू बी गोंसालो ग्वेडिश एंड रूबन नेवेस। सा ऑफ कोर्स हमने उनको काफी बीट करा हुआ है। ही इज बिन ओके दिस सीजन, बट दैट्स मोस्टली ड्यू टू द फैक्ट दैट वुल्व्स का डिफेंस हैज बीन काफी वीक। एंड एज यू कैन सी ऑन द टॉप, वुल्व्स वर losing, Wolves lost 2-3 to Brighton. अगर हम substitutions देखें, Ait Nouri is somebody who can come for this guy Nelson Semedo, although left back usually खेलते हैं। Johnny is also a decent player। आदमा ट्रायोरे, अब मुझे पता नहीं यार ट्रायोरे कौन सा ट्रायोरे शो अप करेगा इस गेम में। समटाइम्स या मोटिन्यो इज नॉट इन द पोर्चुगल स्क्वाड। मैंने पोर्चुगल का स्क्वाड देखा था, जस्ट ग्लांस करा था, बट देयर स्क्वाड इज आल्सो लुकिंग प्रीटी डिसेंट। So yeah, Wolves technically I don't think they should be that much of an issue, but वही है यार, न्यू मैनेजर बाउंस का क्या सीन होता है वही हमें नहीं पता। बाय द वे, ये लाइव में ज्यादा देर नहीं करूंगा बिकॉज oh, Lopetegi is not available for us. He will join on 15 November. Chalo, that's good, yeah, Prashant. Um, but again, he might not officially be there on the touchline, but he could be somebody who's giving tactical instructions or whatever. Matlab, he has an idea of the squad. If he's not there, then it's even more beneficial for us. जितनी भी advantage मिले हमें इस game में मिलनी चाहिए, because um, let me stop sharing the screen again and go back to the previous one. अगर हम दूसरी games को देखें, ठीक है, मैन सिटी ब्रेंटफोर्ड जो अभी थिंक 3 घंटे में है गेम, यार मैन सिटी तो ब्रेंटफोर्ड को, आई डोंट थिंक ब्रेंटफोर्ड विल चैलेंज मैन सिटी। हालैंड आई थिंक हाई जाएगा उनको। सिमिलरली साउथहैम्पटन एंड लिवरपूल, साउथहैम्पटन ने राफ हाउसनूटल को सैक किया, एनफील्ड पे गेम है, दे शुड आल्सो विन। अनदर इंपॉर्टेंट गेम, आई थिंक ये तो चलो स्पर्स और स्पर्स, ये वाला जो गेम है न्यू कासल एंड चेल्सी वाला, 5:30 पे, मतलब मेरे लिए तो 5:30 है, आप लोगों के लिए कितने, 11 बजे मैच है? वाह, तो फिर तो आर्सेनल का गेम 12:15 AM हो गया इंडिया टाइम में। ओ वाह, ठीक है। तो ये वाला गेम, लिवरपूल गेम, मैन सिटी गेम, यूनाइटेड प्लेइंग फुलहम टुमारो, these games are all winnable for the other teams which are coming for the top 4, right? एंड हम ड्रॉप नहीं कर सकते बिकॉज यार वही है कि ऐसा लगता है कि आपने पूरे सीजन स्पॉटलेस रहे हो, एंड लास्ट, बिल्कुल लास्ट हर्डल पे, क्या हुआ भाई, मजा ही नहीं आ रहा? एहसान उल फाक, सॉरी यार प्रॉब्लम ये है ना कि अभी यहाँ पे सुबह 9:30 बजे हैं और मैं 8:30 बजे उठा हूँ। तो मेरी भी एनर्जी थोड़ी सी लो है, बट वही है, जितने लोग इंटरेक्ट करेंगे उतना आई बी एबल टू कम्युनिकेट विद यू गाइस। बट या, मैन सिटी विल प्रॉब्ली बीट ब्रेंटफोर्ड, लिवरपूल विल डेफिनेटली बीट साउथहैम्पटन, टॉटनहम एंड लीड्स कुछ पता नहीं कि कौन सी टॉटनहम आएगी। एंड जो न्यूकासल चेल्सी की गेम है, राइट, ये तो कहीं भी जा सकते हैं। न्यूकासल इज इन टॉप 4, चेल्सी इज एमिंग टू गेट बैक इनटू टॉप 4, सो ऑल ऑफ दिस is a recipe for some sort of pressure for Arsenal. But again, अगर ये वुल्व्स के अलावा कोई और गेम होता, like if it was a Crystal Palace, maybe it was a Brighton, maybe it was an Aston Villa, Leicester City, तो मैं इस गेम से थोड़ा ज्यादा डरता। बट ये वुल्व्स है, वुल्व्स जिसने अपना मैनेजर सैक करा हुआ है, वुल्व्स जो टेबल पे अभी बिल्कुल भी अच्छी पोजीशन पे नहीं है, राइट? अगर हम टेबल को भी देखें, वुल्व्स आर 19th नाउ। नॉटिंघम फॉरेस्ट ने लिवरपूल को हरा दिया था, बट ये हर गेम में तो नहीं होने वाला। सो आई थिंक द टॉप ऑफ द टेबल शुड कंफर्टेबली बीट द टीम विच इज 19th इन द टेबल। एंड न्यूकासल कोई, सॉरी न्यूकासल क्या, वुल्व्स उतनी कुछ स्पेशल नहीं लग रही है, बट क्या करें, इट्स द प्रीमियर लीग, नो गेम इज इजी। इफ यू सी वुल्व्स का फॉर्म, दे ओनली हैव 1 win in the last 5,
compared to us, we have 4 wins in the last 5, so it should be good. Prashant says that Newcastle's defense is solid like us. Yes, joint least conceded. uh Ehsan bhai, I stay in Dublin in Ireland, so right now it is a very cold uh Saturday morning here. So that is why you can say that मेरी energy थोड़ी सी low है. um yes bhai, Ehsan bhai, don't need to spam. uh Hussein says, hi bhai, new to the channel. Hello, nice to meet you and welcome to the channel. Um, so yeah, man, there's nothing more I can say about this game. Is there anything about the Wolves game that you think I should talk about? Shardul says one off game होगा तो ये नहीं होना चाहिए. We have to be in. Of course, man, we have to end this part of the season on top. Because January में it'll help convince so many players to come. I'm not saying कि अगर हम if we come second then players will not come, but it's much easier to tell people it's a better pitch if we say we're top of the table and we need you to keep us here, and that is why we propose that you come to Arsenal, right? एंड जनवरी की बात हम बाद में कर सकते हैं. दनियो की बात हो रही है, मुद्रिक की बात हो रही है, मे बी टीलेमिन्स की बात हो रही है. सो यू नेवर रियली नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन इन जनवरी, बट फिनिशिंग टॉप इज ग्रेट. एंड यार टू बी ऑनेस्ट, यू नो दैट इट्स मैन सिटी, राइट? मैन सिटी से तुम जितना आगे जितनी ज्यादा देर तक रहोगे, इट्स गोना बी बेटर. Tommy Asu fitness, हाँ भाई, that's one of the things I wanted to ask you guys is who do you think we should have um, on left back? Now, Tommy Asu, I don't think he'll be fit. If it's a muscular injury, I think he'll only come back after the World Cup. But who do you think should be left back? Zinchenko, you saw him in the last game, right, against Chelsea. Zinchenko की performance के बारे में क्या लगा आप लोगों को? I thought that he was rusty. It was not his best game, but कुछ कुछ moments पे उसका progression, ball को आगे pass करना, that was very important. Um, Ehsan says, Ehsanul Wasif says, bro, we draw against Southampton. So this game is important. Yeah, man. Zinchenko, Prashant says, Jishan says, hi, bro. Hi, Jishan. Um, so yeah, Zina on left back. Uh, anybody who can make a case कि हमें Tierney को left back खिलाना चाहिए इस game में, हाँ या ना? Because वही बात है, इफ यू वांट टू कंट्रोल द मिडफील्ड, जैसे मैं कह रहा हूँ वुल्व्स के अगेंस्ट मिडफील्ड उनका काफी स्लो है बट प्रोग्रेशन में अच्छा है. बट या नोबडी, आई कैन सी नोबडी हु इज सेइंग कि हमें टियर्नी को खिलाना चाहिए, बट नहीं, ठीक है. जिनचेंको, या दैट्स व्हाट आई वुड आल्सो से, लाइक आई ऑलवेज से, whenever you have the opportunity to play Zinchenko, you play Zinchenko. And for Tierney, I don't know what that means, but he's going to be a good substitute because last game में आपने देखा होगा that Zinchenko got really tired और थोड़ी mistakes करने लग गया था towards the middle of the second half, and फिर Arteta finally had to change him, substitute करा, and then we brought on Tierney. Do you guys think कि जो Carabao Cup में we lost against Brighton, do you think that will have a huge issue on the team? I know कि starting lineup में it wasn't our best players, but towards the end, we did bring on Gabriel Jesus. Um, Shardul says, "पता नहीं दोबारा injured हो जाए, so play him जितना हो सके." And that is my thinking as well, Shardul. But yeah, this Brighton loss in the midweek. Now, personally, I am not that affected, but I am not a professional footballer, right? And we did try to win that game no matter what anybody says. हमारे जो substitutes थे उस game में, um, हम गैब्रियल जेसूस को मोस्ट नोटेबली लाए थे, जिनचेंको को हम लाए थे, सलीबा खेल रहा था, मार्टिनेली था एट वन पॉइंट ऑन द पिच. फाबियो वेरा ने चलो उतना अच्छा नहीं किया. हाय निखिल, व्हाट्सअप. डू यू थिंक ये जो ब्राइटन का लॉस है कुछ अफेक्ट करेगा हमें? Just write it down in the comments, because personally for me, like I said, as a fan, you can't just care. I mean, you can decide not to care about the Carabao Cup, although that's not a healthy mentality, but as players it does affect to see कि जो second string है, they can't really perform to the level of the first
टीम प्लेयर्स एंड ऑफ कोर्स वो कॉमन सी बात है, सिटी इज द ओनली अनोमली जिसमें उनके सेकंड स्ट्रिंग भी बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। बट इट थोड़ा सा मेरे दिमाग में क्वेश्चन ये आता है कि क्या ये सब्स्टिट्यूट्स की मेंटालिटी चेंज करेगा? Will it make them more desperate? Hussein says no. Nikhil says no, I don't think so, and I hope you guys are right, because yeah, um I think a loss is a loss, and sometimes players take it really badly. Anyway, तो ये वुल्व्स आर्सेनल की बात होगी, कोई और टॉकिंग पॉइंट नहीं है तो ठीक है, अदरवाइज वील मूव फॉरवर्ड टू द अदर गेम्स. नाउ आई एम प्रिटी श्योर एवरीवन एल्स थिंक्स. I don't. So let's take some comments. Shardul says, I don't think so because different mentality comes when it's the EPL. हाँ भाई, EPL is a different mentality. वहाँ पे आप टॉप पे हो, थोड़ा swagger आता है. Rick, I think there is no update on it. I think he should be fine. अभी तक जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था उसमें there were no injury concerns, but if there is anything, we'll get to know in a few hours anyway. Allison, White, Trippier, Cancelo, Rashford, Trossard, Almiron, Saka, Jesus, Haaland, Wilson. On the bench, Dalot, Dunk, Sanchez, and Foden. Oh, are you talking about FPL? I'll tell you my FPL, okay? इस वीक मैंने वाइल्ड कार्ड प्ले किया है. So I have unlimited transfers and I'll probably watch बाबा का stream, and उसमें अगर कुछ चेंजेस मेरे को लगेंगे, वो if he's making good arguments, him and tackle from behind, if they're making good arguments, मैं करूँगा. Um, this match would be quite difficult because of the away game, but we will win. And Jesus goal incoming. Bhai, if Jesus gets the goal, it's perfect. But हाँ, away game is an issue. Like I said, away में हम हारे हैं. So suggestion, Sanket. Okay, wait, hold on. Fantasy, pick team. So yeah, this week I am thinking of tripling up Arsenal. Okay, तो मतलब Wolves का attack has been very toothless unless it's Gonzalo Guedes and everything. But उनके मेरे को लगता नहीं. I think we'll keep them काफी quiet. So I've gone for a Saliba and Gabriel का defense. ट्रिपियर मैंने खिलाया है, ऑल्दो थोड़ा डिफिकल्ट गेम होगा, बट चेल्सी भी थोड़ा सा स्ट्रगल कर रही है. कोनाटे के आते ही कोनाटे के आते ही मतलब लिवरपूल हैज चेंज्ड एंड दे प्लेइंग अगेंस्ट अ साउथहैम्पटन जो विदाउट अ मैनेजर है, टू बी ऑनेस्ट. सो आई थिंक लिवरपूल की भी क्लीन शीट हो सकती है आज. ट्रेंट इज अ गुड ऑप्शन. आपने क्या क्या खिलाया हुआ है? एलिसन, वाइट, आपने वाइट को खिलाया हुआ है, ठीक है, उसको भी क्लीन शीट का मिल सकता है. ट्रिपियर इज गुड. कैंसेलो, हाँ, उसका कैरबा कप में सस्पेंशन हो गया, सो दैट्स अ गुड शॉट एज वेल. रैशफोर्ड, हम्म हाँ यार, मैन यूनाइटेड इज आल्सो डिसेंट, उन्होंने कैरबाओ में भी अच्छा खेला था. रैशफोर्ड कुड बी अ गुड पिक आगे चल के. ट्रॉसार्ड मेरी टीम में भी है, आल्मिरॉन मेरी टीम में भी है. मैंने साका की जगह मैं सोच रहा हूँ जेसूस डाल दूं या नहीं, एंड फिर उसकी जगह मेरे पास जितने पैसे हैं बचे हुए, आई विल प्रॉब्ली गो फॉर साला इन द मिडफील्ड. एंड आगे आई एम प्लेइंग हालैंड एंड हैरी केन. मेरे बेंच पे लिजांड्रो मार्टिनेज है, केविन मैकलिस्टर और ब्रोजा है. आपका गोलकीपर कौन है? एलिसन है. हाँ, सो आई थिंक योर टीम इज डिसेंट. यू कैन थिंक अबाउट गेटिंग अ साला और अ कोनाटे, बिकॉज आई थिंक लिवरपूल का इस गेम में क्लीन शीट भी आने वाला है, and Salah will most likely score. You can also get Darwin Núñez. He's not a bad shout, to be honest. वो भी धीरे धीरे is finding form, and you never know. Maybe he hits another goal. Maybe he gets an assist. So those are my suggestions. Bhaiya, can I replace Jesus to Foden? Yeah, man, the thing is with City ना, I'd only have Kevin De Bruyne जो permanent रहता है City से, because you never know कि पेप का क्या starting lineup होता है. तो पेप किसी दिन गुंडोगन खिला देगा, किसी दिन बर्नार्डो खिला देगा, किसी दिन मारेस खिला देगा. समडे हिल प्ले जूलियन एल्वारेज एंड समडे हिल प्ले फोर्डन. तो यार सिटी के लाइनअप की वजह से ना काफी पॉइंट्स लॉस्ट होते हैं, एंड केविन डे ब्रुयने इज ऑनेस्टली द ओनली बैंग ऑन स्टार्टर जो हमेशा हर गेम खेलता है व्हेनेवर ही इज अवेलेबल एंड फिट. एंड दैट्स व्हाई आई ऑलवेज कीप केडीबी. वरना सिटी का एडरसन, कैंसेलो, रूबन डियास के अलावा आई एम नॉट रियली श्योर और कौन क्या खेलेगा. Jesus picked and Firmino didn't for Brazilian World Cup squad is robbery. Um, in a way, you are right, but it's, see, Jesus has
started the season really well. He's eventually dropped off, and Firmino का season बहुत better था. But it's also about how versatile. Okay, Firmino भी काफी versatile है, but I think Jesus का गोल थ्रेट इस सीजन ज्यादा है, फर्मिनो प्ले मेकिंग में ज्यादा, एंड आई डोंट थिंक ब्राजील को उतनी ज्यादा जरूरत है. इट ऑनेस्टली डिपेंड्स ऑन हु यू आस्क. फॉर मी आई थिंक गेटिंग जेसूस इज बेटर ओवर फर्मिनो. ही इज यंगर, ही इज मोर इंजरी रेजिस्टेंट. फर्मिनो की इंजरी भी हो जाती है. So for me, Jesus is a better pick. Jesus, 3 goals incoming. I hope so. Not a Newcastle fan, but I must say Almiron is playing really well. Player of the month, Bhaiya, of course, he's playing really well. Bhaiya, can I replace? I've talked about this. I'm going for two well back as a differential. Brighton का किसके against game है यार? Let's see. They are playing Aston Villa. Ooh, that'll be an interesting game. कर सकते हो यार, बट वही है. इट्स अ वेरी ब्रेव पिक, दैट्स ऑल आई विल से. जेसस इज माय कैप्टन फॉर दिस वीकेंड बिकॉज अब प्रेशर नहीं है वर्ल्ड कप स्क्वाड में आने का उस पे. एंड मार्टिनेली पे भी नहीं है भाई. आई थिंक अ लॉट ऑफ व्हाट मार्टिनेली वाज डूइंग बिकॉज वाज उसको वर्ल्ड कप स्क्वाड में घुसना था. याद है आपको लास्ट प्रीमियर लीग गेम में जब आई थिंक बेन वाइट ने क्रॉस किया था एंड उसने पता नहीं क्या एरियल सी वॉली मार दी थी, एक्रोबैटिक सी, इंस्टेड ऑफ हेडिंग इट डाउन टू द कीपर और समथिंग. आई थिंक नाउ दैट ही इज बीन चोजन फॉर द वर्ल्ड कप स्क्वाड, थोड़ा प्रेशर कम होगा, बट एक नया टाइप का प्रेशर आ जाता है. What if you get injured before the World Cup? In the last game before the World Cup, what if you get injured? Although I don't think Martinelli and Jesus are these kinds of players जिनको डर लगता है. They always play at 100%. But maybe थोड़ा सा niggling doubt रह सकता है कि यार what if we get injured? Firmino over Richarlison. Richarlison's also a good player. He's just coming back from an injury, which is the only issue. Rodri, if you're saying Rodri as a FPL pick, I don't think so. I think CDMs को FPL में खिलाना anyway is a very risky move because उनको stats नहीं मिलते ज़्यादा. रॉड्री ऑफ कोर्स बहुत रेयरली बट कभी कभी गोल मार देते हैं, बट आई वुड से डोंट पिक रॉड्री. हाँ भाई, जेसस बेटर प्लेयर देन फर्मिनो. यार वही है ना, इट डिपेंड्स ऑन हाउ. भैया आपको क्या लगता है, कैन आर्सेनल क्वालिफाई फॉर मैड्रिड लीग दिस सीजन? Yeah, I think we'll qualify for the Champions League. I think that should be the minimum. That was the target set by the board and set by the manager. And that is something we should be able to achieve easily, barring कुछ ज़्यादा ही catastrophic हो जाए. मतलब 3-4 प्लेयर्स इंजर हो जाएं, जो हम न्यू साइनिंग्स करें वो सेटल इन नहीं करें, वो भी इंजर हो जाए. So, yeah. Madison and Rashford, big differential. That is true. I agree, Ashutosh. If you have those two players, those are very good picks. But जैसे वही कहते हैं ना, you can't have everybody with the limited budget you have. You can't have a Rashford, Madison, and a Salah, and a Trossard, and Kevin De Bruyne. तो कहीं ना कहीं तो आपको छोड़ना ही पड़ेगा. Third position in Europe, I am happy. नहीं यार, Shardul, target a little higher, man. I mean, yeah, Europa winning itself, I'll be happy because it gets us Champions League. But top two, man, third, nahi. अब वो stage आ गई that I know we can still come third. It's not impossible, but I hope we get third. We get top two at least. Champions हो गए तो फिर बहुत ही बढ़िया बात है. Second or first finish is ice on the cake. हाँ, I mean that's fine. That's fair enough. चैंपियंस लीग रखो डेफिनेटली. एंड अगर यूरोपा लीग जीते तो भाई बहुत बहुत सेलिब्रेशन होना है. चैंपियंस लीग नहीं, मैड्रिड लीग नहीं भाई. आई नो मैड्रिड बहुत जीता है, मैड्रिड द मोस्ट डेकोरेटेड विनर ऑफ द चैंपियंस लीग. स्टिल, who looks more prone to drop points between Newcastle and Chelsea? In the immediate term Chelsea, in the long term Newcastle. Because देखिए यार, चाहे अभी चेल्सी की कितनी भी प्रॉब्लम्स हो, लोग कितना भी पॉटर को मीम करें, ही इज अ ग्रेट मैनेजर मैन. एंड ये सिर्फ मैं उसके ब्राइटन की स्टिंट की वजह से नहीं कर रहा हूँ. द मैन वेंट फ्रॉम मैनेजिंग लीड्स यूनिवर्सिटी, एक यूनिवर्सिटी टीम को कोच करता था, उसके बाद ऑस्टरसंस, उसके बाद ब्राइटन, उसके बाद चेल्सी, एंड ही इज शोन अप एंड ही इज बीन गुड इन एवरी टीम ही इज मैनेज्ड. चेल्सी का इशू यही है कि ही इज अ प्रोजेक्ट मैनेजर. ठीक है, ये सब तो अग्री करते हैं, राइट? ग्रैम पॉटर इज अ प्रोजेक्ट मैनेजर, but Chelsea is not a project club.
चेल्सी इज अ क्लब जहां पे आप सक्सेस नहीं जीतो, डन. Yes, thanks, Hussein. Like कर दो stream. Even if you like the stream, if you like it, that's great. If you don't like it, comment छोड़ दो भाई. Even if you don't like this live stream, that's perfectly fine. But otherwise, like कर दो, मेरा reach बढ़ता है and it's all good. So like I was saying, Potter is a project manager who is at a club which is not a project-based club. Oh भाई, ये क्या हो गया? Right. So Chelsea is not a project-based club. In the immediate term, Eddie Howe की टीम ज्यादा settled लग रही है. कुछ players are playing well beyond their capabilities and very well actually. Miguel Almiron, Callum Wilson is of course doing what he does best. Saint Maximin is good. Trippier is playing great. Bruno Guimaraes is playing great. But then the question comes कि जितने टाइम ये लोग टॉप फोर में रहते हैं उतना ज्यादा इट बिकम्स अ लिटिल मोर प्रेशर सिचुएशन फॉर देम. यार वो एक ना मेंटालिटी होती है, क्लब का कल्चर होता है कि या वी कैन डू इट. लाइक अब तुम सिटी को देख लो, ठीक है. व्हाई इज इट दैट सिटी के फैंस या फिर बाकी प्रीमियर लीग फैंस आर नॉट टू स्केर्ड कि सिटी नहीं जीतेगी? व्हाई इज एवरीवन सो कॉन्फिडेंट कि सिटी इवेंचुअली जीत जाएगी? It's essentially because City have been there, done that consistently over years, right? Newcastle, स्टीव ब्रूस के अंदर, um, और भी उनके जो एलन पार्ड्यू से लेके जितने भी मैनेजर्स रह चुके हैं उनके, न्यूकासल हमेशा रेलेगेशन के साथ फ्लर्ट करती थी. देड गो ऑन अ बैड रन ऑफ फॉर्म्स, बट इवेंचुअली ठीक है, वो कुछ ना कुछ करके दिल सर्वाइव. अब टॉप फोर की बात आ गई है एंड वो फैंस के अंदर नर्वसनेस, प्लेयर्स के अंदर थोड़ी नर्वसनेस. एडी हाउ एज अ मैनेजर मस्ट बी अ कॉन्फिडेंट मैनेजर, बट वही है यार, कैन दे कोप विद द प्रेशर ऑफ बीइंग वन ऑफ द बिग टीम्स, राइट? एक वो प्रेशर आता है कि आर यू अ बिग टीम और नॉट, और डू यू इवेंचुअली एंड अप बीइंग बॉटलर्स लाइक टॉटनहम? Okay, let's see. Like kar do, guys. Like I said, please like the stream if you like it. If you don't like it, leave a comment about why you don't like it. Like I said, I appreciate all honest feedback and constructive criticism. Newcastle ke paas no Europa, so 1 week, one match, and Jan mein acha transfer window, so top seven incoming. I think, yeah, I think top seven for them, they would be disappointed. मे बी अगर वो सीजन के फर्स्ट हाफ में थर्ड पे हैं, आई थिंक देड वांट टू फिनिश एटलीस्ट इन सिक्स. देड वांट टू किक आउट वन टॉप सिक्स टीम फॉर श्योर. टॉप सेवन तो डेफिनेटली, टॉप सिक्स आ गए तो आई थिंक दे कैन बी हैप्पी इफ दे प्लेइंग यूरोपा नेक्स्ट सीजन. बहुत बड़ी अचीवमेंट है. आर्सेनल हैज नो रिप्लेसमेंट फॉर पार्टी. दो तीन इंजरी आर्सेनल सीजन कैन गो डाउन. हाँ यार, बट दैट्स ट्रू फॉर एवरी टीम, राइट? अभी देखो मैन यूनाइटेड में वरान इंजर हो गया. लेट्स से लिसांड्रो मार्टिनेज इंजर हो जाता है और कैसेमीरो इंजर हो जाता है, या एरिक्सन इंजर हो जाता है, या ब्रूनो इंजर हो जाता है, यूनाइटेड सीजन्स गॉन. चेल्सी का यू कैन ऑलरेडी सी बेन चिल्वेन एंड रीस जेम्स आर इंजर्ड, their season is going down. City is probably the only team who is the most injury resistant. Liverpool का भी आप देख रहे हो, no Jota, no Luis Diaz, Konate is just come back and now their defense is looking better. So I think for most teams in the Premier League, right, it is true. If you lose two to three players, it's your season is pretty much in jeopardy. तो ये सिर्फ आर्सेनल स्पेसिफिक नहीं है. लाइक द वीडियो, थैंक यू. द डिफेंस लाइन इज रियली गुड. इफ यू टॉकिंग अबाउट न्यूकासल, यस मैन, उनका डिफेंस बहुत ही बढ़िया है. ट्रिपियर आई थिंक इज वन ऑफ द की प्लेयर्स देयर. शेयर भी अच्छा खेलते हैं, फैबियन शेयर. एंड व्हाट हेल्प्स देम इज निक पोप अच्छा खेल रहे हैं. निक पोप इज अ वेरी गुड कीपर फॉर देम एज वेल. Getting a lot of Danilo news through social media with what I think is Fab confirming deal being closed. यार अभी तक फैब ने तो कुछ बोला नहीं है, बट वो पाल्मेरस के साथ जीत गया है एंड पाल्मेरस ने बोला था कि समर में नहीं, यू कैन ट्राई इन जनवरी. एडू की रिलेशनशिप इज प्रॉब्ली गोइंग टू हेल्प अ लॉट, बट देखना पड़ेगा यार. When January comes around, that's the only time when we'll be a little more confident. Would this be odd considering how we hit transfer links across the summer? Um, यार देखो, मीडिया हैज टू गेट क्लिक्स एंड राइट नाउ जिस लेवल एंड हाइप पे आर्सेनल फैंस ऑपरेट कर रहे हैं, यूजिंग आर्सेनल्स नेम एंड गेटिंग क्लिक्स इज वेरी इजी. सो आई वुड नॉट पे टू मच हीड टू व्हाट मीडिया सेज, बिकॉज भाई वो मीडिया है. शुड वी गो फॉर जाओ फेलिक्स? आई थिंक ही इज आउट ऑफ आवर प्राइस रेंज. We cannot spend all the money we have, and especially some part of next season's budget, on one player and hope he works out. Plus, if we get João Felix,
That means Eddie becomes third option, and Balogun goes. So we'll have to sell a couple of these players, maybe Eddie and Balogun, and then get Jao Felix, because यार दो से ज्यादा हम strikers नहीं खिला सकते. um, Not to mention जॉन जूल्स जैसा प्लेयर भी है अकेडमी में, माइकल एडवर्ड्स भी है. So ये बहुत प्लेयर है हमारे पास स्ट्राइक पोजीशन पे. We'll have to sell first, even if we can dream about getting Jao Felix. Personally for me, Jao Felix is going to Man United. वो रोनाल्डो को रिप्लेस करेगा. City is no one's rival. Everyone's happy to win it. Nobody cares. Yeah, man. City is on another level completely. Mudrik not worth more than 60. We should go for Musa Diaby, Pedro Neto. Pedro Neto की भाई इंजरी हो गई ना. आई थिंक उसी की इंजरी हुई ना. या पोडेंस खेला था. पेड्रो नेटो की काफी सीरियस इंजरीज हो जाती हैं. उसको एसीएल हो जाता है. उसकी 2 बार एसीएल हो चुकी है. So I would not take Pedro Neto. Musa Diaby, yes. Musa Diaby is a good shout. Jonathan Ikone is a decent shout as well sometimes. But Musa Diaby would be a good signing. Although, यार वही देखना है कि the thing with Mudrik is everyone rates him because he's very skillful and he can play on both wings. So maybe that's why. But 60 million, I agree, man. That's too much. If we get Danilo for cheap, then maybe Mudrik we can get. Um, City managed the players so well, every team should learn. Bhai, it's also about management, but it's also about the depth they have, right? Now imagine if your striker is tired and you want to give him, who do you bring on? You bring on Julian Alvarez, who is like another Aguero. Bhai, imagine replacing Aguero twice. Okay, you replace him with Haaland and then you also replace him with Julian Alvarez. If your winger is tired, if your 100 million winger is not performing, you can bring on the hottest youngster in the Premier League, Phil Foden, right? Hottest not in terms of looks, hottest in terms of potential and skill, right? Banda is a multi Premier League winner. ठीक है. आपके राइट विंग पे इफ थिंग्स आर नॉट वर्किंग आउट, हु डू यू ब्रिंग ऑन? रियाद माहरेज. अगर आपके सेंट्रल मिडफील्डर में चीजें काम नहीं कर रही हैं, गुंडोगान नहीं काम कर रहा है, you have your Audreys and everyone. भाई मतलब that team is stacked यार. And their only left back is the only position जहाँ पे मुझे लगता है उन्होंने साइनिंग भी कितनी बढ़िया करी है. जॉन स्टोन्स, एमरिक लापोर्ट और रूबन डियाज नहीं है, नो प्रॉब्लम. वील हैव मैनुअल अकांजी, दैट्स आल्सो ग्रेट. So City, they have too much depth, man. Every team should learn from them. Every team should have the checkbook they also have. I'll tell you, मैंने लास्ट लाइव में भी यही बोला था और काफी लंबा रैंट था उसका कि भाई everyone says City has great players, they manage players well and everything. They've also signed Stefan Jovetic, they've also signed Wilfred Bony, and these players have not worked. They've also spent 50 million on wingbacks when they have not worked, and they've bought another 50 million wingback. ठीक है. जाओ कंसेलो से पहले उनके पास डनीलो था, राइट? फिर उनको स्वैप करना पड़ा एंड देन जाओ कंसेलो फाइनली वर्कड आउट. तो यार, for every good players they have, they've also had 2 3 very fucked up signings. Botman, Burnshare, Trippier, best defense. It's a very good defense. Best, I wouldn't say. I think Arsenal का best defense है. Mudrik not worth more than 55. अच्छा 60 से 55. Next comment पे आशुतोष भाई 50 million पे आ जाएंगे. भाई do you miss Ozil? Yeah man. Although उसका end बहुत बेकार था and he fucked it up for himself. So yeah, but I miss Ozil, man. Peak Ozil was great. I would tell you what, Peak Ozil would love to play with these players. But we now have Martin Odegaard, who is as good, if not better than Ozil. Ozil not better, but he's as good as Ozil. Can be better than Ozil. Felix even not needed. I agree, man. United to invest 100 million fresh world class midfielder. Jude, if they get top four. Bruno Guimaraes, I will not be surprised, but I think Guimaraes will be committed to the Newcastle project. Declan Rice, I think Chelsea jayega. Frankie De Jong, bhai, I cannot take another transfer window of Frankie De Jong and United, please. Shardul says tomorrow Chelsea are targeting top young talents. They bought some and they want Endrick, the best talent in Brazil. Arsenal do must move incomplete, not bring kids like Marquinhos. Bhai, players like Endrick, players like Neymar, players like Mbappe. Yeah, these are high potential players, and sometimes you have to pay big money because eventually they'll be worth double, triple, whatever that is. But that doesn't mean कि Marquinhos is not a good player. Yeah, he's young, he's very raw. Yeah, देखो,
I'll tell you this. I am 28, okay? I've moved to a European country जहाँ का कल्चर इज नॉट समथिंग आई एम अनफेमिलियर विथ. मुझे पता है आयरलैंड है कैसा, एंड आई स्ट्रगल टू फिट इन टू दिस कंट्री. नाउ आई एम 28 एंड फीलिंग थोड़े से स्ट्रगल्स, राइट? ये मार्किनियोस लड़का इज 17 18, आई डोंट रिमेंबर हिज एग्जैक्ट एज. ही इज मूव टू इंग्लैंड जहाँ पे ही डजंट स्पीक द लैंग्वेज. आई एटलीस्ट स्पीक इंग्लिश. ही डजंट नो हाउ पीपल आर. ही इज अवे फ्रॉम एटलीस्ट हिज होम टाउन एंड हिज फैमिली. सोचो उसके लिए कितना डिफिकल्ट होगा एडजस्टमेंट करना, राइट? Um, so I think thoda we need to be a little patient with players, man. Every 17-year-old cannot be a Neymar or an Mbappe or a Vinicius for that matter. सोचो भाई, विनिशियस के लिए रियल मैड्रिड पेड सो मच. जिडान के अंडर विनिशियस को सब राइट ऑफ करने लग गए थे. नाउ फाइनली व्हेन ही इज 21 22 23 is when Vinicius is signing. मतलब it's been essentially 5 6 years for Vinicius to sign, right? For Vinicius to shine. तो मार्किनियस को थोड़ा टाइम दो, एंड्रिक पे इतना प्रेशर मत डालो. एंड इफ एंड्रिक गोज टू चेल्सी, फेयर प्ले टू देम यार, वो काफी पैसा डाल रहे हैं. सो गुड. As ad hoc winger in place of Saka, we can place Fabio Vieira. Bhai Nitin, I agree, but Fabio Vieira is struggling. And like Mikel said in the last game, he's not had a preseason and he was injured. But during this World Cup break, hopefully he gets a lot better. We've paid 30 million for him. In the modern times, it's not a lot of money, but it's very important, जैसे आप कह रहे हैं, as a Saka replacement, as an Odegaard replacement, as even a Martinelli replacement. He's also a very versatile player, and we need him to perform eventually. कैल्विन फिलिप्स, हाँ भाई, मतलब कैल्विन फिलिप्स को भी कौन, मतलब सोचो भाई, उन्होंने इतने अच्छे प्लेयर साइन किए हैं और कैल्विन फिलिप्स ने अभी तक खेला नहीं है. दैट इज हाउ गुड दे आर. Would you take CR7? No, I will not. Not because I don't love the player, but it is just not how Arsenal plays. आप गैब्रियल जेसूस को देख लो और आप सोचो क्या क्रिस्टियानो रोनाल्डो ये सारी चीजें करेगा. ड्रिफ्टिंग इन एंड आउट, प्लेइंग एंड एवरीथिंग, हर टाइम बॉल को प्रेशर करना है, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली 70 80 मिनट्स तक एनर्जी देना है. 19, Vinicius, right? Okay, yeah. So, um, Bhaiya, do you want Chiesa as Arsenal? Yeah, Chiesa, Raspadori, even Politano, all these Italian players I would love. But ये जो Vlahovic के साथ हुआ था ना हमारा सीन, where we were very confident of getting Vlahovic and then Juventus ने आके पता नहीं हमसे भी कम पैसे दिए and they stole a Serie A talent. भाई सोच सकते हो Vlahovic हमारी टीम में होता हम कितना बढ़िया खेल रहे होते. अभी चलो Jesus मिल गया, that's good, but Vlahovic would have been insane for us last season. खैर, तो जब से ये सदमा लगा ना Vlahovic वाला, I've never been confident about Serie A players. चलो he's at Juventus, बट नहीं यार, इटालियन प्लेयर्स लव यूवेंटस. जो बार्सा एंड रियल मैड्रिड का पुल होता है ना फॉर स्पेनिश प्लेयर्स, फॉर साउथ अमेरिकन, वही इटालियन प्लेयर्स के लिए यूवे का पुल है. सो आई डोंट नो. एक्साइटेड फॉर मैच डे बट ऑलवेज नर्वस दैट वी ड्रॉप पॉइंट्स एंड फाइनली सरेंडर ड्रॉप्स आउट. पता नहीं क्यों हर मैच से पहले. हाँ यार, बट दिस famous last words, but I don't think this is a match where we should be nervous, simply because um Wolves are 19th man and they don't have a manager and they're playing horribly. So yeah. Danilo or Tielemans. Bhai, I will, if you're saying कि हमें ये दोनों लेने चाहिए, then of course. If you're asking me कि who will I choose from between them, then I will choose Danilo. Tielemans is good. He's a great playmaker, but मुझे लगता है वो डिफेंसिवली उतना solid नहीं है at all. वो थोड़ा slow भी है. But if we get both, of course, perfect. But I think Partey की जगह Tielemans I will never get. Juventus struggling. हाँ Shardul, Juventus are struggling, but so were Barca, right? Barca were struggling not only on the field, चलो now they are top of the table, but they were struggling financially. And look वो किस level के players को attract कर पाए, right? Barca looked like a club in crisis, but जो उनका pull है, Andres Christensen, Jules Koundé, Robert Lewandowski, right? उन्होंने देखा, every player has seen कि बारसा की wages का लेके क्या shit show हो रहा है, कभी wage delay हो रही हैं, मीडिया स्मीयर कैंपेन्स हो रहे हैं. उसके बावजूद बारसा क्या प्लेयर्स अट्रैक्ट करिए. अभी देखो इनिगो मार्टिनेज, बारसा जाने की बात हो रही है, राइट? इनिगो मार्टिनेज ग्रेट सेंटर बैक,
बट कोई भी स्पेनिश टी प्लेयर के लिए बारसा या रियल मैड्रिड आएगी, दे विल गो मैन। सेम। अब आप देखो, रूडिगर भी था चेल्सी में। चेल्सी इज नॉट वाज नॉट बैड व्हेन रूडिगर वाज देयर। Chelsea could also give him a lot of money also, but Real Madrid ka call hai and he went. I rate Chiesa. My only concern is his injury. I think he's one of the best wingers, very technical and very good. To be honest, अगर Chiesa की बात करें तो for me Chiesa would be a Liverpool player. Barella would be a dream signing. हाँ भाई, I highly rate Nicolo Barella, man. He is a very pure centre mid. Physically he's fine. पासिंग है अच्छी, बहुत अच्छी है, ड्रिबलिंग बहुत अच्छी है यार। मतलब व्हेन ही इज ऑन द पिच ना, पूरा इंटर इतना स्मूथ लग जाता है, मेरे को बहुत ही बढ़िया लगता है। गाकपो इज अ गुड साइनिंग फिजिकल, बट यार वो ना, अब ये जब से टेन हाग आए सारे डच प्लेयर्स यूनाइटेड भागेंगे, तुम लोग देखना। बड़ा क्लब है यूनाइटेड, पैसे बहुत ज्यादा देते हैं, डच मैनेजर है, यंग डच मैनेजर है, एंड कोडी गाकपो ऑफ कोर्स वन ऑफ द हाईएस्ट टैलेंट्स। बरेला विल बी आउट ऑफ बजट भाई, हाँ, नो चांस विल गेट बरेला। हमारा पुल कब अच्छा होगा? आई होप यूसीएल के बाद भाई। if we finish in the top two, in fact UCL में भी आप सही कह रहे हैं, if we finish very comfortably ना in the Champions League and we're very high on the table, हमारा पुल भी बहुत होगा। एंड ऐसा नहीं है कि हमारा पुल कभी था नहीं, आर्सन वेंगर की वजह से। आधे आर्सन वेंगर, थियरी ऑनरी, पैट्रिक वियरा, रॉबर्ट पेरेस, इमानुएल पेटी, for some people even Lauren Koscielny also, Samir Nasri also, Fabregas also. Fabregas तो चलो Spanish है, but most of the French players preferred Arsenal because we had all these legends. Everyone who looked up to Thierry Henry, Arsenal. Kulusevski, Spurs का best player, loved Henry. He's Swedish. He's playing for Spurs. That's a sad thing, but he's an Arsenal fan. Doherty, Arsenal fan. बहुत सारे आर्सेनल फैंस हैं। डैरन बेंट स्पर्स के लिए खेला था, राइट? तो ऐसा नहीं हमारा पुल कभी था नहीं, बट या इन द रीसेंट ईयर्स नहीं है। Kritdanya says Arsenal and Wolves will draw. I hope you are wrong, but I'm slightly optimistic that we will win, and I think we'll win 3-0. करते हैं अभी predictions करते हैं भाई लोग। Gakpo is coming to United 100%. He'll go. Bye Sanket, have a good match day, and I hope your favorite team wins, whoever it is. Can we call Netherlands a dark horse for World Cup? I'll tell you, Netherlands' squad is very balanced. It's just that when is it not a good squad, right? Netherlands हमेशा major tournaments में हक देती है semi-final में जाके. Even if they're reaching the semi-final, I will not call them as favorites because वो हमेशा flounder कर जाती है at the end. उनके पास जब रॉबिन था, वैन पर्सी था, भाई वो लोग तब कुछ नहीं कर पाए। एंड आई एम नॉट सेइंग अभी का स्क्वाड कंप्लीटली बेकार है एंड एवरीथिंग, बट हिस्टोरिकली हिस्टोरिकली जो स्पर्स करती है, दैट इज व्हाट नेदरलैंड्स आल्सो डू। सो बट दे हैव यंग प्लेयर्स, दे हैव गुड प्लेयर्स, सो यू नेवर रियली नो। I want Brazil to win this World Cup because I don't want Argentina to win, क्योंकि मेसी बारसा ने बारसा 2006 में भी और भाई don't remind me of 2006 man, don't remind me, it's a painful memory. But I do want Messi to win. यार वो होता है ना, some greats deserve to win a World Cup. By Sanket. Shardul, yeah man, Isaac's also a decent signing for Newcastle. I think acclimatization plus injury issues के वजह से वो थोड़ा नहीं खेला है. But when he comes back, he'd be a good backup to Callum Wilson until Callum Wilson starts falling off, and then Isaac will take over. He's a very young player also, man. Tielemans, Partey and Odegaard would be a good midfield. But वही आप CDM पे आशुतोष, who will you play at CDM? I will not play. Yeah, from CDM, these are the two things that Partey does: breaks up opposition plays and moves the ball forward. I think Tielemans can move the ball forward. He can also shoot like Partey, but he can't break up plays. I'm not confident in his defensive abilities. I support two teams, United and Madrid. Then I hope United wins today for you. For Arsenal fans, I hope they don't. क्राइफ दोबारा आएंगे फिर भी नहीं जीतेगा हॉलैंड, एंड वही है बात यार। देव हैड अ गुड स्कोर, क्राइफ के साथ नहीं जीते थे भाई। आई जस्ट हैव अ फीलिंग। सो योर क्वेश्चन व्हाट, मतलब जो भी किसका क्वेश्चन था भाई? धृति सुमन
का दिलतिस्मान का था कि आर देयर डार्क हॉर्सेस? आई थिंक नेदरलैंड्स आर ऑलवेज डार्क हॉर्सेस, बट जस्ट लाइक द हिस्ट्री ऑफ द टॉटनहम, इट्स द हिस्ट्री ऑफ द नेदरलैंड्स. वो हमेशा लास्ट में हक देते हैं. ओके, वी आर फाइनली डन विद द कमेंट्स. भाई लोग, इफ यू डोंट ऑलरेडी, यू कैन फॉलो मी ऑन ट्विटर एट दिस हैंडल. मैं हमेशा लाइव ट्वीट करता हूँ गेम्स के ड्यूरिंग मोस्ट ऑफ द टाइम्स. और ओहो, मेरे तो इमोशंस बहुत हाई होते हैं. ओके, जल्दी से we'll look at the other games of the World Cup. 1 घंटा होने वाला, मुझे पता भी नहीं चला. Okay, if you look at the matches, Man City Brentford, भाई Man City should easily win this. I think it'll be a 3-0 win to Man City. If Haaland gets a hat trick, it's 5-0. Otherwise, I think one Haaland goal, one goal midfield से, और एक Foden या कोई दूसरा विंगर मार देगा. But I think Haaland will score in this game. So if you don't have Haaland in your FPL, put Haaland in your FPL. That's my suggestion. लिवरपूल साउथहैम्पटन, साउथहैम्पटन ने अपना मैनेजर सैक कर लिया है और कोई चांस ही नहीं है. ओह, मैंने तो शेयर ही नहीं किया स्क्रीन. होल्ड ऑन, होल्ड ऑन. क्रोम टैब एंड प्रीमिक्स करिए. राइट, सॉरी बॉयज एंड गर्ल्स एंड any other gender who's here. So Liverpool Southampton, very easily Liverpool's going to win. They're going to win with the clean sheet also. So it's going to be a good match day for Liverpool. एवर्टन बॉर्नमथ इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग. एवर्टन काफी अच्छा खेल रही है, कुछ प्लेयर्स उनके बहुत अच्छे हैं. लास्ट गेम में क्या हुआ था एवर्टन का? दे लॉस्ट 2-0 टू लेस्टर सिटी, राइट. और अगर हम बॉर्नमथ का देखें, बॉर्नमथ एवर्टन थर्ड, ओह, सो बॉर्नमथ वन 4-1 अगेंस्ट एवर्टन. बट आई गेस वो टीम कुछ थोड़ी सी होगी फालतू की एवर्टन वाली. As you can see in the predictions, कि 36% Everton, so pretty even है. I think this game will be a 2-2 draw. Um, Everton could win. अगर कोई comments कर रहा है, I will read them later, guys. Leicester City and West Ham. West Ham जो struggle कर रही थी, everyone expected West Ham to do well. Leicester जिसने एक पैसा नहीं खर्चा है, is finally getting wins. कल मोहक भाई ने भी कुछ ऐसे ही बोला था अपनी स्ट्रीम पे कि 0 wins in their first 9 games and 4 wins in their last 5 or something like that. That is the statistic. So Leicester is also in good form. Madison World Cup, of course, he'll be overjoyed, and I hope he plays with a lot of freedom without Darna Sharna. I think a Leicester 2-0 is on the cards here. Leeds Tottenham. Bhai log, Leeds Tottenham. Tell me अपने predictions. I am going to wait. How can somebody? भाई तुमने सादिक भाई को नहीं देखा है? सादिक भाई supports Man United and Barcelona. वो तो यूरोपा लीग में मिल रहे हैं. Wouldn't be surprised if Newcastle finishes third, Liverpool fifth, because yeah, you're right. This one game a week thing will be beneficial for Newcastle. I agree. But I think Chelsea will eventually come back and top four will be very familiar. It'll consist of Man City. Arsenal's going to be there. Um, I think it's going to be Chelsea and Liverpool. I think Man United barely miss out on it. And uske baad Spurs. I think Spurs will fall off drastically. देखते हैं. Hopefully I'm right. Um, so yeah, bhai, Leeds and Tottenham, what predictions are we saying, guys? I'll look at your predictions. लिख देना भाई, अगर 2-1 लिख रहे हो तो लिख देना 2-1 for the Leeds and Tottenham prediction, या 2-1 to Leeds or 2-1 to Tottenham, whatever. Forest and Palace, Palace should win, man. Vieira has this in the bag. I'm confident. Zaha भी अच्छा खेलने लग गया. अरे यार, किसी को FPL में Zaha रखना है, please Zaha भी रख लो. Zaha is also a good differential. Although अब काफी लोग रख लेंगे उसको. So Zaha can be a good player. This is the game of the week. Newcastle, everyone is predicting Newcastle to win, but don't count out Chelsea, man. Because against Arsenal, Chelsea defended really well. It's all about that decision making in the final third. वो याद है अगर किसी ने आर्सेनल का गेम देखा था, Havertz had 2 opportunities to play the ball into the box, जहाँ पे एक ओबामयांग खाली खड़ा हुआ था, and I think एक में स्टर्लिंग थे, somebody else. And yeah, man, I think Chelsea defensively थोड़े solid हैं. Let's see कि can Newcastle break down this Chelsea defense. I don't think Chelsea का attack में उतना threat होने वाला है because Newcastle का defense is absolutely perfect. Brighton Villa, Brighton जीतेगा. As much as I love Emery, it's either going to be 1-1 or 2-1 to Brighton. United Fulham, Fulham के ground पे क्या लगता है? Fulham United का भी क्या लगता है? Spurs will win 1-0, 90 plus 5 minutes. Of course, that's the most Spursy.
थिंग दे कैन डू, दे विल प्ले शिट ऑल गेम, फिर लास्ट में हैरी केन पेनल्टी मार देगा एंड सब लोग सेलिब्रेट करेंगे एंड एवरीवन। फॉरेस्ट क्या रेलिगेशन बाहर आ पाएगा? पैसा तो बहुत खर्च है। नहीं, आई डोंट थिंक सो, एंड आई थिंक कहीं ना कहीं ओनर्स को भी लगता है कि फॉरेस्ट इज गोइंग टू गो डाउन. That is why they've backed the managers. Maybe if they come up next season, then they'll try a next season, next season. Then they'll try a different approach than what they did by signing 22 players. But I don't think Forest is going to escape relegation. St. James Park may match hai, bro. It will be difficult for Chelsea. Yeah, man. Like I said, Chelsea is good defensively. That's what Potter is trying to do. But offensively, they hardly do any threats, man. Havertz, Aubameyang, and Sterling are a very poor, very, very poor attacking lineup. City के against भी it took a new player, Lewis Hall, जो काफी सारे chances create कर रहा था in the Carabao Cup, but they still lost. So it's all going to be about कि can Chelsea hold on essentially. मेरे को तो लगता है draw होगा यार. Imagine हम इस गेम को इतना हाइप अप कर रहे हैं और न्यूकासल एंड चेल्सी ड्रॉ 0-0. Forest relegation bahar or nahi. Fulham 1-1 United. Hopefully you're right. It'll be the best result. And Andres Pereira scoring. I will be happy. So yeah, guys, these were the games. This was my life. I'm sorry अगर आप लोगों को मेरी energy इस game इस preview में कम लगी. Like I said, I am sore from the gym और यहाँ बहुत ठंड है अभी. मेरा तो मन कर रहा है मैं रजाई लेके घुस जाऊं. But I wanted to get a video out because I've promised you guys कि प्रीव्यूज तो बनेंगे एटलीस्ट. एंड अगर कल जैसे दिन आ जाते जहाँ पे काम होता है, देन आई कम ऑन लाइव. नाउ इवन लाइक आई सेड 700 subs हो गए. इट्स अ ग्रेट थिंग फॉर मी personally, but whether it is two viewers on my live stream, whether it's 80, whether it's 100, it doesn't really matter as long as there is one or two or three people interested in me and they love interacting with me. I will keep doing lives. So it's never about the views. But if you like the stream, it helps with the engagement, but you don't have to like the stream if you didn't like the stream. Um, Thanks, Prashant. Perfect stream. All the best today. Thank you so much. But yes, thank you, Ashutosh. Thank you, Prashant. Thank you, Shardul. Thank you, Navid. Um, thank you, Sanket, who's gone. Thank you, Dritsman, Kritadnya. I hope I'm getting your names right. Agar nahi hai, to I'm so sorry. Thanks to Hussein, I guess that's your name, Nitin, and all you guys, man, Masu, everyone who's come here, everyone who's interacted, everyone who's given their prediction and everything. What job domain do you work? Are you pursuing a master's? Neither, my friend. I am doing my PhD. After 4 years, I will become a doctor, academic doctor. So yeah, I am not doing my master's. I'm doing my PhD for 4 years. So thank you so much, guys. Hopefully, Arsenal win. जैसे मैंने कहा है, ग्लोबल वॉफल्स को अगर फॉलो करना है तो कर लो. मैं सोच रहा था कि हम वर्ल्ड कप की भी बात करें, बट यार दिस स्ट्रीम इज गोइंग टू गो ऑन फॉर एन आवर एंड मैंने अभी तक नाश्ता भी नहीं किया है. सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड होपफुली आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. राइट, नेक्स्ट स्ट्रीम का नोटिस आप लोगों को एक दिन पहले मिल जाएगा 100%. ठीक है, थैंक यू. सी यू नेक्स्ट टाइम एंड कम ऑन गनर्स.